Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 61 for that topic body fluids and circulation. Now after learning the composition and all that details regarding the human blood, we have also studied the blood groups. A, B, O system we have studied first. That human population has got four kinds of the blood groups there, main A, B, AB and O. And also there are two another groups there for each kind of the blood group. That is called RH plus and RH minus. So that means there are total 8 groups there. A RH plus, A RH minus, B RH plus, B RH minus, AB RH plus, AB RH minus, O RH plus, O RH minus. Okay, many of the times RH word we don't use in the practice. A plus, B plus, like this. So B plus, my blood group is B plus. B positive I will say, and that's why I am always positive person. Okay, now what is that RH factor we have seen? That is one kind of the antigen present on the surface of the RBCs there. In addition to this, AB, like that. Okay, and that is called as the RH gene or rhesus gene or antigen D. Why? Because it was first observed on the in the that RBCs of what, on the surface of RBCs in rhesus monkey. So obviously some of the population has got erythrocytes with Rh positive antigen and Rh antigen, and they are called the Rh positive blood group persons. And those who are not having that antigen D, they are called as Rh negative. So we know about that. Rh positive means which contain antigen D or with that antigen RH factor कहते हैं उसे. And RH negative means what? Do not have that D antigen. D antigen जिसको नहीं है, और particularly no RH factor, जिनको RH factor नहीं है on RBCs, they are called as what? RH negative. Now in the last lecture I told you that whenever RH negative person's blood get exposed to RH positive blood during the blood transfusion, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो RH नेगेटिव है, कौन सा भी हो सकता है, AB, O like that, लेकिन RH नेगेटिव है, and if that will get exposed to the, that means if blood transfusion is given with the positive blood group, RH positive, suppose किसका A नेगेटिव है और उसको A पॉजिटिव वाला ब्लड दिया गया ट्रांसफ्यूजन के वक्त, जो भी जाएगा 300 ml, 1 packet, 2 packets, whatever it may be. So what will happen now? That because of this antigen present on that blood coming from outside, that the Rh negative person's blood will start to produce antibodies against that antigen. या एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करने लगेगा, and then that will destroy that antigen and RBCs. It will start destroying that antigen RBCs. Okay, and that will be not compatible blood. That is called as the RH incompatibility or mismatching. समझ में आ गया? अगर RH नेगेटिव जिसका ब्लड है, उस पर्सन को अगर RH पॉजिटिव वाला ब्लड दिया गया तो क्या हो जाएगा? दैट बिकॉज नो एंटीजन इज देयर इन केस ऑफ द RH नेगेटिव पर्सन, पर जब वो देखेगा RH पॉजिटिव का एंटीजन, इट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द एंटीबॉडीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस देयर, द RH पॉजिटिव वाला जो ब्लड है उसके RBCs डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, because that antibody will destroy the antigen D present on RBC, and that is dangerous for the life.
ओके, वो फिर हीमोग्लूटिनेशन हो जाता है, दैट पर्टिकुलरली क्लॉट्स में बी फॉर्म इनसाइड द ब्लड वेसल, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर. तो इसे कहते हैं मिसमैचिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड ग्रुप का मिसमैचिंग हो गया, दैट कॉल्ड इनकॉम्पैटिबिलिटी. It is more dangerous when that incompatibility occurs during the pregnancy. RH incompatibility in pregnancy. ये हम लर्न करने वाले हैं. That actually causes one disorder known as erythroblastosis fetalis. What is the name of that? Erythroblastosis fetalis, or that is also called as hemolytic disorder of newborn. It's quite interesting, remember. Suppose that pregnant woman has got, we'll say mother, that RH negative group, जो भी होगा वो, and by chance if the fetus developing in her embryo, in her uterus, fetus developing in her body, that is in her uterus, in her womb, is suppose having RH पॉजिटिव ग्रुप, ऐसा हो सकता है. आप कहेंगे ऐसा कैसा है, मदर अगर RH नेगेटिव है तो ये RH पॉजिटिव कैसा हो जाएगा, फीटस उसका ही तो बेटा है वो, नो डाउट. बट एक्चुअली यू नो दैट दिस एंटीजन डी इज डोमिनेंट जीन. हो सकता है इसका जो फादर है वो RH पॉजिटिव वाला है, यानी RH पॉजिटिव हस्बैंड, RH नेगेटिव वाइफ. ये कॉम्बिनेशन अगर है तो प्रेगनेंसी के टाइम केयर लेना पड़ेगा. RH पॉजिटिव मैन और फादर एंड दैट पर्टिकुलर मैरिज विद द RH नेगेटिव वुमन, तो क्या हो जाएगा? Then the problem may arise, which we are going to discuss now. ये शुभ लाभ देखा है मैंने actually. So if the marriage happens between the RH positive person, man, and RH negative person, because that gene is dominant gene, antigen will be there produced in the fetus, and therefore fetus born will always have, इनका जो fetus हो जाएगा, that will always have, that baby born will be always have RH positive group, because ये dominant. So it is said that during first pregnancy there is no problem. First pregnancy में problem नहीं है, यानी first child will be okay. First pregnancy no problem to the fetus. Okay, क्यों? Because there is never mixing of mother's blood and fetus blood. fetus blood और mother's blood का mixing नहीं होता due to placenta. रिप्रोडक्शन टॉपिक में आप बिल्कुल लर्न करेंगे. प्लासेंटा नाम का जो टिश्यू रहता है उसकी वजह से ये मिक्स नहीं होता है, डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होता है, ये एडवांटेज है. एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इनकॉम्पैटिबिलिटी विल नॉट ऑकर, मिसमैचिंग विल नॉट ऑकर. So first pregnancy will be safe and the birth will also occur safely, the child will be okay. But it may be possible, I am saying possible, it does not happen all time. It may be possible that possibility कहता हूं मैं बार बार, होने वाला ऐसा नहीं, एक संभावना है, possibility is there during that particular birth process. बर्थ प्रोसेस जब हो रही है, एट दैट टाइम दैट मदर्स RH नेगेटिव ब्लड विल गेट एक्सपोज बाय चांस टू लिटिल अमाउंट ऑफ RH प्लस ब्लड. RH प्लस ब्लड जो है ऑफ फीटस, ऐसा हो सकता है. कहीं भी लिटिल इंजरी अगर थोड़ी है और थोड़ा सा भी मिक्सिंग हो गया एट द टाइम ऑफ द बर्थ प्रोसेस, आई एम सेइंग, जब वो प्लासेंटा से निकल चुका है, अभी
और बर्थ हो रही है, थ्रू द वजाइनल कैनाल इट इज पासिंग, तो उस वक्त ये मिक्सिंग थोड़ा अगर हो गया एंड मदर्स ब्लड हैज रिसीव्ड दैट fetus with the fetus blood having RH पॉजिटिव फैक्टर, तो मदर्स के ब्लड में, ये तो बर्थ हो गया, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देन मदर्स ब्लड और मदर्स बॉडी विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज फॉर RH फैक्टर, ओके। RH फैक्टर के लिए एंटीबॉडीज बनाने लगेंगे अभी मदर्स की बॉडी। दैट मीन्स दीज एंटीबॉडीज विल गेट प्रिपेयर्ड इन द ब्लड ऑफ दैट मदर। इफ द सेकंड प्रेगनेंसी विल बी देयर, देन द चांसेस ऑफ डेंजर आर देयर। ये बात ध्यान लो। अब सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, ऑलरेडी द मदर्स ब्लड हैज गॉट RH antibodies, so that antibodies may get leak along with the plasma of the blood during the transfer of the nutrients and materials to the fetus. प्लासेंटा में ये दो ब्लड मिक्स तो नहीं होते हैं, पर मदर के ब्लड से कुछ न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो है वो परकोलेट होते हैं, पास होते हैं थ्रू द थिन वॉल ऑफ दैट कैपिलरीज and through the umbilical cord of that fetus they are passed into the fetus. तो at that time ये antibodies pass हो सकती है in the body of fetus from mother in the second pregnancy I am saying, and then that antibodies will start destroying RBCs of that fetus, and that is very dangerous. So many of the time termination of pregnancy may take place. वो अगर fetus को सहन नहीं हो गया, वो उसके इरिथ्रोसाइट्स बार बार डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इट मे बी पॉसिबल देयर दैट द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन विल टेक प्लेस, और दैट अगर लेट पीरियड में हो गया, वो सक्षम हो गया वो तब तक बेबी, देन दैट बेबी मे सफर फ्रॉम सीवियर एनीमिया और सीवियर जॉन्डिस. सो दिस इज रियली डेंजरस. तो ये जो डिसऑर्डर है वो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम में होने वाली. ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी दिस हैपन्स, दिस डिसऑर्डर ऑफ मिसमैचिंग ऑकर्स, इनकॉम्पैटिबिलिटी ऑकर्स. मिसमैचिंग कहते हैं उसे ऑफ ब्लड, फीटस ब्लड एंड मदर्स ब्लड ऑकर्स. और सेकंड के बाद में जितने भी हो जाएंगे उतने. फर्स्ट प्रेगनेंसी इज ओनली फ्री, but second, third pregnancy will be there, and that disorder of the fetus is known as erythroblastosis fetalis. नाम याद रखो, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और hemolytic disorder of newborn, उसे HDN डिसीज कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं. अभी आजकल इसके ऊपर भी डेफिनेटली रेमेडी मिल गई है, दैट एंटी factors for that antibodies are nowadays given in the form of injection if such couple is there during pregnancy period. प्रेगनेंसी पीरियड के दरमियान ही अगर ये ब्लड ग्रुप चेक किए गए हैं पेरेंट्स के, और मदर अगर निगेटिव ब्लड ग्रुप की है और फादर अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो यानी खाली RH देखना है, बाकी के ग्रुप का नहीं, AB ABO का नहीं. Mother is having negative blood group and father is having positive blood group, then definitely during second pregnancy these anti factors for the antibodies of that RH factor will be injected there into the pregnant mother, and then they will destroy that antibodies produced by that mother, and then this disorder will not occur. पर ये स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है देखो. और अभी आप भी ध्यान में रखो, ये कुंडली वगैरह देखते हैं वो ठीक है, वो अपने अपने विश्वास की श्रद्धा की बात है एट द टाइम ऑफ मैरिज, ओके. पर उससे ज्यादा आजकल तो ब्लड ग्रुप और ब्लड का कंपोजिशन टेस्ट करना जरूरी है, इजंट इट? दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर कोई है ऐसा RH नेगेटिव RH पॉजिटिव प्लानिंग है, उसमें वो मैरिज ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट यू कैन टेक द प्रिकॉशंस. तो जरूर मैरिज करते टाइम मुझे कांटेक्ट कीजिए
I will give the proper advice. So I am confident that you have understood this part very properly. We'll meet again in the next lecture. Till then, take care. Thanks a lot.